नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मोबाइल क्लिनिक हिसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक ये पार्सल आया है बरगढ़ उड़ीसा। इसमें कस्टमर ने कोई फ़ोन भेजा है रिपेयरिंग के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन है इसमें। छोटे बॉक्स में पैकिंग है। पैकिंग थोड़ी मेरे को इसकी लूज लगी। ओ, आसूस रोग फोन 5। पिछले हफ्ते हमारे पास ये एक फ़ोन आगरा से भी आया था, अभी एक ये उड़ीसा से आया है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये मदरबोर्ड हमने पूरी तरह चेक कर लिया है। ये कहीं से कुछ शॉर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। चलते चलते अचानक से बंद हुआ है ये सेट। और हमें जो इसकी जो प्रॉब्लम मिली है वो प्रॉब्लम इसके सीपीयू से मिली है। सीपीयू को रिवॉल्व करने से ये समस्या ठीक हो जाएगी। हम इसके सीपीयू को आज अभी रिवॉल्व करेंगे। क्या रिजल्ट्स आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहे, देख लें।
दोस्तों हमने सीपीयू को रिवॉल्व कर दिया है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, कहीं किसी टाइप की कोई पेस्ट, कोई भी डस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल A1 काम हुआ है इस पे। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो इसके लिए हम इसको पैनल में फिक्स करते हैं। ये इसका कूलेंट है जो इसको गर्म नहीं होने देता। अब इसको हम लगाते हैं चार्ज पे, और ये लगा दिया। कुछ हुआ क्या? हो गया। वाह, फोन चार्ज लग गया है और 4% ये चार्ज भी है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। हो जा भाई, हो जा, शाबाश। यार क्वालिटी तो है फ़ोन में, मानना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त हार्डवेयर है इसका। फ़ोन की लुक, डिस्प्ले की क्लैरिटी, सब कुछ A1 है इसमें। ये लो भाई, फ़ोन प्रॉपर ऑन हो गया है। डाटा का भी कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल सेफ है।